रेमो फर्नांडिस ने संगीत को कब जाना? शायद गोवा की बाहों में समुद्र, रेत, पहाड़ों, खेतों और नारियल के पेड़ों के आसपास जब शामें परिवारों को एकजुट कर 7 सुरों में पिरो जाती थीं तब संगीत था खुद के लिए, खेलने के लिए, नाचने के लिए और प्रेम का स्रोत बढ़ाने के लिए। शायद इसीलिए रेमो का संगीत हर भौतिक ज़रूरत से परे है। वो आज़ाद है, उतना ही जितना उनकी रूह आज़ाद है। ऐसी ही कुछ आज़ादी का आभास होता है इस मुलाकात में बिटवीन अस। वेलकम टू द शो रेमो। It's my pleasure, Balpreet. Thank you for inviting me. आप गोवा में रहते हैं हाँ. and this is right up in the north. Yes. There must be a major change in the culture and Yes. You people live life in a king size. अच्छा In every way, you know. Calm, maybe you're hardworking. In play, you'll party hard, you're party animals. Your music, and even women, you know, you hear the bhangra and even women get up and dance without inhibitions. और हम लोग गोवा में सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग म्यूजिक माइंडेड है और डांसिंग भी करते हैं जी। You know, once I remember, you know, रात को किसी ने मेरे को आइसक्रीम खाने के लिए लेके गए। हाँ, लेके गए किधर इन द सिटी और एक गाड़ी आई और उधर पार्क किया। So some people recognized me Right. और उन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। in the car और two ladies and two gentlemen फुटपाथ में Got off the car and they started started dancing. They invited me to dance. जी। No, such a thing you will never see in Goa, you know. So everything is king size और आपका peg भी king size, काम भी king size, play भी king size. I love the Punjab for that. Yeah. But जो हमारी इमेज है गोवा की हाँ. वो काफ़ी हद तक इसी तरह की है कि people drink, they eat, they Yeah. have an easy, lazy lifestyle and they make music. That is true. That is true. लेकिन ऐसा spontaneity नहीं है. I really appreciate that a lot. पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी साउंड्स आप acquainted हैं? I cannot say I'm very well acquainted, but like the rest of the world, internationally known. Yeah. ये तो सिर्फ पंजाबी साउंड के लिए नहीं है. जी। ये तो पंजाबी सोल के लिए है. पंजाबी म्यूजिशियंस या सिंगर्स हैं जिनका काम आपने सुना है या देखा है? One name that comes to mind is Gurdas Maan, of Yeah? course. And, Have you heard him? I think I've heard him live, yes. अच्छा। A long time ago, during the days when Channel V, MTV पहले शुरू हुआ था इंडिया में. There were so many artists. Each one had his own style. That was the beauty. Gurdas Maan would come with his Punjabi style. Lucky Ali had his own style. Colonial Cousins had their Yes. style. Alisha Chinay. There was Silk Route. Yes. There was me with my Goan That's style. right. Or it was very rich. That was a very The interesting tapestry. music scene at that Yes, time. yes. And it was original. क्योंकि बॉलीवुड में बहुत डायरेक्टर्स एक कॉमन स्टाइल अडेप्ट करते हैं. Very few music directors Experiment. maintain their own style. I feel individuality. Yeah. आपने A.R. रहमान के लिए भी गाया है, आपने उनके साथ काम किया था बॉम्बे में. हाँ, बॉम्बे में और डॉड में और एक फिल्म वो गाना हिट नहीं हो गया लेकिन खामोशी ओ मारिया. जो No, the songs संजय I लीला sang. भंसाली. हाँ. मैंने 2 गाना डायरेक्ट किया खामोशी में. एक था होया हो जी. और एक था शिंगा लिंगा. Right. Yeah. Yeah. Can you hum some song out of all these songs? Do you remember any of those? Of course I remember, but I would like to hum a new song. Yeah, sure. ये भी नया फिल्म में मैंने टाइटल ट्रैक कंपोज किया. Love You म्यूजिक Sonio. डायरेक्ट किया. हाँ, फिल्म का नाम है लव यू सोनियो. जी. एंड ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म का हीरो एक गोवन है और लड़की तो पंजाबी है. And they are studying in Mumbai, so there is Hindi, Konkani, which is from Goa, there is Punjabi, a little bit of English. Right. It goes like this. Oh Sonio, oh Sonio, I love you, love you, love you, love you, Sonio. Oh Sonio, oh moja Sonio, tuja mogana pora na piso zala Romeo. Oh Sonio.
ओ मेरी सोनियो तू मेरा वर्ल्ड कप मैं हूँ तेरा धोनियो ओ सोनियो ओ मेरी सोनियो तुआडा फूला वाली फ्रॉक लाया मुंडियो it's a fun love song, you It's know. a very interesting lyrics also. हाँ क्योंकि बहुत जवान प्यार है, ये पहला प्यार कॉलेज जी। में। तो मैंने ऐसा सोचा कि जब हम जवान हैं तो प्यार में हम रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर और Yeah. फॉर्मल क्लोथ्स पहन के ऐसा नहीं करते हैं, यू नो। द फर्स्ट लव इज एक्साइटमेंट. Yeah. You're so Joy. happy. It's Yeah. about going to college early in the morning just to see her face or his face, and bunking classes, going to a movie, going to a club, dancing. जी. You want to jump up on the table in the canteen, in the college canteen, and say, "I have a girlfriend for the first time in my life. Yes, she's here, the most beautiful girl in college." You know, that's जी. the excitement which I tried to put in the song, Yeah. rather than a slow, sentimental love song. आप गोवा में पले बड़े. By the sea you've grown up. The sea has played a big part I was in my life. The rice fields, the hills, the coconut trees, जी. and life was very simple. You know, when I was a child, you know, people were very warm. और entertainment क्या था? You know, television नहीं था, जी. और DJs भी नहीं थे. हाँ. तो जब एक पार्टी था तो each one would bring an instrument. Some uncle एक वायलिन बजाएगा, अच्छा. और एक cousin पियानो बजाएगी, और कौन गाना गाता था. और so we entertained ourselves. You know, सब घर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो था ही. आपकी इंसाइट है इस बात पे कि जिस तरह की लैंड की टोपोग्राफी होती है, आसपास जो भी नेचर के एस्पेक्ट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसकी इम्प्रेशंस आपकी म्यूज़िक पे आती हैं. समुद्र ने और वो सारा जो उसके आसपास का जो लैंडस्केप है, उसने आपके म्यूज़िक को पहले, और दूसरा आपकी शख्सियत को क्या दिया है? वो इन्फ्लुएंस कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियस में एक बड़ा शेयर दूसरा इन्फ्लुएंस देता है म्यूजिक में. If I grew up in Delhi, I would have a different kind of influence in my music, in my personality. Like what? The big city life. देखिए, क्योंकि मैं गोवा का हूँ इसलिए मैं बॉम्बे में नहीं रहता हूँ. I didn't shift to Bombay. बॉलीवुड तो मुंबई में है, लेकिन मेरे को वो टेम्पटेशन नहीं आया, यू नो, गोवा छोड़ के मुंबई जाऊंगा और बहुत फेमस होऊंगा और बहुत पैसा करूंगा. बहुत साल हो गया. मैंने एक कार्टून फिल्म देखा था. एक ग्रास हॉपर है फॉरेस्ट में, और वो एक पेड़ पर यू नो बैठकर वो एक गिटार बजाता है और गाना गाता है. तो हॉलीवुड का एक शार्क आता है, बिजनेसमैन प्रोड्यूसर, वो बोलता है, अरे आप इतना अच्छा गाना गाता है, आइए मेरे पास. तो वो ग्रास हॉपर बोलता है, आपके पास आऊँ? किधर? हॉलीवुड में. हाँ, लेकिन क्यों? आपको बड़ा स्टार ये बनाऊंगा. तो बोलता, अच्छा, लेकिन क्यों? अरे बड़ा स्टार बनाएंगे तो आप बहुत फेमस और बहुत रिच होएगा, बहुत पैसे. अच्छा, लेकिन क्यों? इसके बाद में जब आप बहुत रिच होगा तो आप एक ब्यूटीफुल जगह में यू नो यू कैन लिव इन अ ब्यूटीफुल स्पॉट विथ नेचर एंड एवरीथिंग. तो ग्रास हॉपर बोलता है, अच्छा, अरे लेकिन मैं इधर हूँ, आई एम ऑलरेडी हियर. सो इट्स वेरी सिंपल, but it's so philosophical at the same time, you know. So I was happy in Goa making music, and that's where I still am. आप आर्किटेक्चर पढ़ने बॉम्बे गए थे, उसके बाद वहाँ पे भी आप रहे, थोड़ी देर बॉम्बे में रहे, लेकिन यू रिटर्न टू गोवा. Yes. नहीं, बॉम्बे में 5 साल रह के मैं यूरोप में 1.5 साल ट्रैवलिंग कर. You hitchhiked. I hitchhiked around Yeah, Europe. what were those days? वो उन एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या दिया और क्या सिखाया अपने बारे में? सेल्फ डिस्कवरी. It was the greatest school of life. जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो ये आइडिया बहुत रोमांटिक था हमारा मन में, टू अर्न माई लिविंग बाई प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स. लेकिन फुटपाथ पर, रास्ता पर लोग आपको सुनने को नहीं आया.
The people are passing, they're busy. If you want their money, you have to attract their attention. तो इससे पहले मैं एक I used to sit on a chair with my guitar and sing serious. उधर मैंने सीखा to project myself, to attract their attention. So now people say that I have a good connection with my audience, showmanship on stage. वो सब मैंने यूरोप का रास्ता पर सीखा. So I lived for 2.5 years, earning my money. When you're young and you don't need a lot. Yes. You actually never need a lot. Actually, you never need a lot. And when you're young, you know that you don't need a lot. Exactly. Later on, we forget that. We get into this elusive world. Exactly. Yeah. आपने सीखा कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है. So, how do you think आप अपनी ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन अब बिठा पाते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक ऑडियंस is a person there, and I've gone on stage to talk to that person, to communicate with that person, not to tell that person, now you see how wonderful I am. My right profile is beautiful, so I'm going to stand like this, and my left profile is like this, and I'm going to sing. It's not for that, मैं स्टेज पर जाता हूँ उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जब हम ऑडियंस को हमारा एनर्जी देते हैं और जब वो मेरे को वो एनर्जी वापस देते हैं, that's when the concert takes off. Yes. जब आप म्यूज़िक में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप कंपोज कर रहे हो या गा रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि जब शुरू करते हैं बजाना और गाना तब, और फिर एट द पीक एंड देन अगेन कम बैक, वो जर्नी जो है वो क्या होती है उसमें? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गो थ्रू, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर केपेबल ऑफ टचिंग? It's a very curious question. I think the main thing is losing yourself and to be one with existence. When your thoughts stop and you just feel the existence of the whole universe and cosmos and you are part of it. सब एक होता है जी, और there are no limits जी, then to what you can do. जी, और वो moment सब concert में नहीं आता है. yeah. I try to reach that moment at every concert, because once I reach that moment, then the rest of the concert is in that state. There's no singer and song, they both become one. But it's amazing that you have experienced it so many times. You Oh keep yes, so many experiencing it. times. When I'm in the studio, वो तो completely opposite trip है. मैं अकेला हूँ स्टूडियो में, क्योंकि मैं ही पूरे instruments में ही बजाता हूँ in my songs. मतलब आप अकेले होते हो और कोई म्यूजिशियन नहीं होता उसमें? नहीं. And I sing all the background voices also, all the harmonies. So the entire song is you? Entire song is me. If I may say so, I think that's a very rare thing. Yeah. But in India that has not been so much appreciated because nobody is aware of what it entails in the studio. Can you to just do all describe that, what exactly? Because right now we have a lot of we have a techno music, so a lot of stuff isn't fitted into the keyboard. That is different, yes. That is You're all not on the talking about keyboard. that. No, I'm not talking about that. Yeah. I'm talking about actually playing live instruments. Different pieces and like then putting them together. Like guitars are real instruments, right? They're not on your computer. जी. The flutes, bansuri, the bass guitar, lead guitar, एक प्रोग्राम करके सब साथ में बजाता हूँ. तो मेरा स्टूडियो तो एक ही रूम है. So I'm at the mixer, adjusting the sound, hello, singing a little bit. Then I press record, I sing, and I punch myself in, out. So I've always enjoyed doing this. Doing this. तो एक गाने को रिकॉर्ड करने में कितनी देर लगती है आपको? About a week. It's much more than between 3-4 days to a week, depends on how much how intricate an arrangement it calls for. So it must be such a fulfilling experience. Oh, I love it. I love the feeling of hearing a song, building up. Yes. It's almost like my architect side gets satisfied. You're building a building. You're building a block building. by block. Yes, block by block. Foundation and out of walls nothing, and flooring. and there is a song. Yeah. The song is there,
Even if you have the song, the melody, the lyrics, but after that, when you start to add orchestrations and the bass and the flutes and the instruments and the guitars and the violins, and that's when the song comes alive, and you know, it's a great feeling. Yeah. So that is a very alone part for me Right. in the studio. Or stage per is a different side of that same song. Then I sing it in front of 10,000 people, and I love it both. आपको एक एक composition सूझती कैसे? And you write your own songs also. Yes, I write my own lyrics also. So I also how does a design. song? By the way, I also design the album covers Yeah. because I love drawing. Like I told you, I think in the Yeah. beginning, I love Yeah. drawing. So I find expression. I have discovered another passion, and that is, I won't say film making, but video making. So I script and direct my own music videos, Okay. and I also sit at the editing table and edit them, do the color correction, all that. I love doing that. हाँ, so कोई गीत. एक आइडिया कैसा हाँ, एक गीत कैसे आता है? You never know when and how an idea for a song will come. You know, you never know. You know, one is the rhythm, one is a melody, and one is the lyrics. So कौन सा idea पहला आएगी? You never You know. cannot say. You know, sometimes I'm driving and a beat comes to my mind. My mind, I'm just thinking of the beat. So that's a Qawwali beat actually. Then I say, hey, on this beat, maybe I should do this, maybe I should do that. Sometimes I'm just driving down the road and I get an idea in words. Like for example, there's this one line which is going on in my mind. Yeah, there is nothing as beautiful as a beautiful woman unaware of her beauty. I had this idea when I think I was again driving on the road and I saw a woman among the workers, you know, building the road, and the way she was walking with the pail on her head and the beauty on her face and the elegance of her body. She could have been walking down the ramp, Yeah. but there she was, and she was totally unaware of how beautiful she was. And I realized that there is a difference when a beautiful model walks down the ramp. She knows Yeah. how that I beautiful own she this. is. Yeah. You know. अच्छा, ये आपकी जो ज़िंदगी है as a musician, as a musician who travels, as a musician who makes music, as a musician who explores so many aspects within himself through music and this cosmos. ये जो सारा cumulative process है, ये जो cumulative journey है, इसने आपको अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या insights दिए हैं? आपने music ने क्या characteristics पैदा किए हैं जो शायद ना होते अगर आपके अंदर music ना होता तो? You know, everything is interconnected, and what I find in music, a mathematician will find in mathematics. That is infinity. Right. You know, I believe that हम सब लोग पैदा होते हैं एक टैलेंट के साथ, एटलीस्ट एक टैलेंट के साथ, कभी कभी 2 टैलेंट 3 टैलेंट के साथ, और हमारा ड्यूटी है वो टैलेंट फाइंड आउट करने के लिए, and to express the talent, to exploit explore it and develop it further, and develop it. And many times we ignore it, और हम suppress करते हैं वो talent को, और क्यों? क्योंकि वो इतना respectable नहीं है. My son, a cook, terrible. My son should be a doctor, should be a scientist. You know, my daughter, a gardener. You know, she should be again a doctor or something. So we force our children to become third-rate doctors rather than a first-rate chef and a first-rate gardener. So we work from 9 to 5 at a job which we hate, and we wait for 5 o'clock in the evening to go back home to that hobby which is our passion. By that time, the energy is we gone. are tired, we have been stressed the whole day. But when we decide to make that passion our profession, then it's not a 9 to 5, then 24 hours you're living with something you love doing. काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आपने कोलैबोरेट किया है, काम किया है. A.R. Rahman being one of them. Jethro Tull, you collaborated with. Yes, that was. Yeah. ये सारे एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या दिया? Jethro Tull, तो you know, they were my heroes. You know, जब मैं कॉलेज में था. जी. और जब मैं कॉलेज में था, अगर किसी ने मेरे को बोलता था कि एक दिन
आप उनके साथ बजाएंगे. You wouldn't have believed I it. would have told him, listen, something's wrong with you. Please take 2 aspirins and go to sleep. You are hallucinating. It was like a dream. जी. Like a dream to play with my childhood hero. Yeah. And not only to play with him, but he wanted to play in one song of mine. So मैंने तो एक song choose किया हमारा और मैंने उनको email किया. And he heard the song and he told me, send me 2-3 more. He liked it. So I sent him 2-3 more, 3 more, and he chose them all. Yeah. He wanted to play them all with me. And I could not believe that Jethro Tull, the whole group, was at that moment rehearsing my songs somewhere in Europe. The flute song, Bombay City, O Meri Munni. जी. It's a wonderful experience, like a dream come true. And A.R. रहमान, आपको क्या लगता है कि A.R. रहमान इतने खास क्यों हैं? उनकी ओरिजिनलिटी और उनका टैलेंट. अगर उनको एक भंगड़ा उनका ट्यून कंपोज करने का है, वो एक टिपिकल पंजाबी भंगड़ा नहीं कॉपी नहीं करेगा, या रहमान का स्टैम्प डालेगा उस पर. आई फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट ईच म्यूजिक डायरेक्टर शुड पुट हिज स्टैम्प और हर स्टैम्प. जैसे आपने Maybe they don't have a stamp, maybe they don't have a stamp, an also individual because stamp to put on it. also because they haven't even explored the sea of world music, global music. No, I think the sea that they have not explored is the one within themselves. Yeah, To have that stamp to put on the world music. that's right. And I feel that is important. इतने सालों से आप गा रहे हैं, बचपन से गा रहे हैं, 4 साल की हाँ, उम्र से गा रहे हैं. क्या हमेशा ही यू बीन वेरी 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 फुलफिल्ड एंड अबाउट द एंटायर जर्नी दैट यू बीन मेकिंग, कि आपको भी कभी कभी कोई टेम्पटेशन हुई है, या पीपल हैव ट्राई टू टॉक यू इनटू डूइंग थिंग्स फॉर अ बिगर इफेक्ट? हैव यू हैज देयर बीन अ डेंजर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड? It never came actually, that temptation, or for that I have to credit Goa. Right. Because I was never tempted enough to leave Leave Goa. Goa. I came back from Europe because of Goa. I confess You're it's so not because attached. I confess it's not because of India. And I wrote a song about it also, that and I wrote that song as if Goa was a woman. Yeah. And I'm telling her that I'm sorry, but I had to go out and know other women, to realize how Your precious value. you are to me. The value of Goa, the warmth of Goa, and also the fact that it's home. So it's in my DNA. आपने एक गाना गाया था राजीव गांधी और सोनिया गांधी के लिए, हेलो राजीव गांधी, जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी शायद. बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. वो गाना कैसा था, और एंड हाउ वाज इट टू मीट राजीव गांधी, मोर इम्पोर्टेंटली? Oh, it was wonderful. He was because I met him right in the beginning of his tenure as a prime minister. या वो टाइम में वो बहुत I would almost use the word innocent. Innocent था, genuine था, sincere, enthusiastic था. और मैंने ये गाना लिखा जब मैंने नोटिस किया कि गोवा में जब एक बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर आता था, प्राइम मिनिस्टर आता था, वो टाइम पे हमारा गवर्नमेंट सब रास्ते रिपेयर करते थे और वाइट वॉश करते थे सब बिल्डिंग्स. और तो मैंने और I wrote it just after Sanjay Gandhi died in the crash. या And I knew that Rajiv never wanted to get into politics. या तो मैंने उनके sympathize किया, बेचारा अभी तेरा मम्मी तेरे को पॉलिटिक्स में फोर्स करेगी. All you wanted was to fly your aeroplane, but you have a duty towards your motherland and you have a duty towards your mother. So now that's it. Yeah. How does it feel to be forced to hold the reins of the nations in your hand? To be forced to. And then I said, but anyway, besides all that, please come to Goa every year. I'm not inviting you out of love and affection, but because every year, whenever you come down, the Goa government does at least some repairs to Goa. And then I was asked to sing. When Rajiv Gandhi came down to Goa, the Goa government asked me to sing at the function. और उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट किया कि उनको प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करना, कुछ कंट्रोवर्सी मत करना, क्योंकि आई वाज नोन एज समबडी हु वाज आउटस्पोकन थ्रू माय सॉन्ग्स एंड थ्रू माय स्टेज व्हाटएवर सेड. सो आई सेड, मी अपसेट राजीव गांधी, इंसल्ट राजीव गांधी, क्यों? आई विल नेवर डू दैट.
And of course, I went up on stage and I sang the song. And I was not insulting Rajiv Gandhi. On the contrary, I was criticizing the Goa government. And I told him I would love to offer you a cassette of the song. He left the whole security and he came to the stage to meet me and to collect the cassette from me, shook hands and went away. That's it. और एक एडिटर था गोवा में, उन्होंने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया. हाँ, शुरू किया क्योंकि मैंने उसका न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज किया था वो न्यूज़पेपर की पॉलिसीज के लिए. So it was all ego. Oh, it was ego, it was vendetta. Playing its game. Yeah. And he started accusing me of betraying Goan cult, some abstract things like that, you know. But Rajiv Gandhi came to your rescue. I think he spoke for you. Yes. And he said, "Come on, I like the song, and yes, there's nothing wrong with it." Exactly. That's right. Exactly. And that was the first time that a prime minister, in India at least, you know, was communicating with a rock musician. Right. इस वक्त अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हैं? Of course, as a musician, सारा दुनिया हमारा म्यूजिक सुनाने को है. I think the ultimate aim in life is to be one with creation. Achieving fame does not give you that. Achieving money does not give you that. But once you achieve that connection with the eternal, everything else is perfect. Yes. Perfect. Yeah. That is the highest aim I have in life. I hope I achieve it. I mean to that, Remo. We wish you really all the best. Thank you so much. Thank you so much. आपने हमें वक्त दिया. Please keep coming back to Chandigarh and I would love that. Give us more music. Thank you so much. I would. सात सुर, सात आसमान, सात समुद्र. जब संगीत सीमाओं को लांघकर अपने भीतर की ऊंचाई और गहराई टटोलने लगे, तो साधना बन जाता है. इस साधना की मिठास रेमो फर्नांडिस के आसपास हमेशा रहे. बिटवीन अस. ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ. ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ. ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ.